गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इश्यू ऑफ शेयर्स, दो सम्स किए थे कल हम लोगों ने, फर्स्ट एंड फोर्थ। लेट्स सॉल्व फिफ्थ। पेज नंबर 31, प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ। Y Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of 20% per share, payable as follows: 2 rupees on application, 5 rupees including premium on allotment, first call 3 rupees, second call, final call 2 rupees. Applications were received for 30,000 shares and pro rata allotment was made to the applications for 24,000 shares. Any excess money paid on application was employed on account of sum due on allotment. Kamal, to whom 400 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Tamal, the holder of 600 shares, failed to pay both the calls and his shares were forfeited after the final call. Out of the shares forfeited, 800 shares were issued to Ramesh, credited as fully paid for Rs 9 per share, the whole of Kamal's share being included. Pass necessary journal entries to record the above transactions. लिखो। प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ, पेज नंबर 31. Working note number 1. Application money details. Draw the format. Application money details. Application money per share is rupees 2. 2 रुपए.
आज ये कहाँ है, दिख नहीं रहा, क्या नाम उसका अपना? प्रसाद। अच्छा, प्रसाद ना। करो स्टार्ट। हम्म। व्हाट इज द साइज ऑफ पब्लिक इशू, कितने शेयर्स ऑफर किए? 20,000। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 30,000। और केयरफुली पढ़ो बेटा, कई बार ना प्रॉब्लम घाई में पढ़ने से मिस्टेक्स हो जाते, समझ में नहीं आते। एंड प्रो राइट अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेशंस फॉर 24,000 शेयर्स। प्रो रेटा अलॉटमेंट 24,000 एप्लीकेशंस पे हुआ है, जबकि एप्लीकेशंस आए कितने? 30,000। मतलब इम्प्लाइड है कि बचे हुए 6,000 नल अलॉटमेंट कैटेगरी में गए। फिर तो प्रो रेटा अलॉटमेंट सिर्फ हुई है ना, वो भी 24,000 एप्लीकेशंस पे हुई है, तो बचे हुए 6,000 नल अलॉटमेंट है। तो लिखो, फर्स्ट कैटेगरी नल। हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड अंडर नल? 6,000। Number of shares allotted? Nil. Application money received at the rate of rupees 2? 12,000. Application money on shares allotted? Nil. Excess? 12,000. यहाँ कोई चॉइस नहीं है बेटा, नल अलॉटमेंट है, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो ही नहीं रहा है, तो अप्रोप्रिएशन क्या करेंगे? नल अलॉटमेंट है तो पूरा की पूरा 12,000 का रिफंड होगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोरेटा। How many applications are considered here? 24,000 and allotted are 20,000. So what is the ratio of allotment? 6 is to 5. For every 6 shares applied, 5 shares will be allotted. Application money received. Application money on shares allotted 40,000. Excess 8,000. I think completely 8,000 can be appropriated towards allotment. Refund nil. Total 30,000, 20,000, 60,000, 40,000, 20,000, 8,000, 12,000. Working note number 2. Allotment money received. Right hand side corner, rupees. Allotment money due. How many shares are allotted? 20,000 shares into rupees 5. Per share 5 रुपए allotment money है. 1 lakh. Guys, out of this 1 lakh, certain amount is already received on application which is appropriated towards allotment. Less appropriation of excess application money.
फर्स्ट वर्किंग नोट का सेकंड लास्ट कॉलम 8,000, बैलेंस अलॉटमेंट मनी बचा हुआ पे नहीं हुआ है पूरा, इसलिए बैलेंस अलॉटमेंट मनी 92,000। सब लोग दी हुई इंफॉर्मेशन पढ़ो। कमल टू whom 400 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। कमल ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है बेटा। 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आया है। रुक जाओ, अपन लिखते बाद में, पहले एक बार समझ लो। ये हर नॉर्मली इस टाइप की हर प्रॉब्लम में ये आपको वर्किंग नोट करनी पड़ने वाली है। 400 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। 400 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से बोला तो 2,000 रुपये ड्यू हो रहे। लेकिन आप अगर देखोगे तो अलॉटमेंट की एक ही कैटेगरी है ऊपर, प्रोरेटा। तो इसने 400 शेयर्स इसको अलॉट हुए हैं, अलॉट। तो उसने अप्लाई कितने किए वो देखने पड़ेंगे, क्यों तो जो एक्सेस पैसा उसने एप्लीकेशन पे दिया है वो ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ हुआ है। तो अलॉटमेंट रेशियो अगर आप देखोगे तो वो 6:5 है। तो 400 शेयर्स अगर अलॉट हुए हैं तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स को किया इन दैट केस? 480 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 80 एप्लीकेशंस ऐसे थे जिसके ऊपर अलॉटमेंट हुआ नहीं, बट एप्लीकेशन मनी तो आया था। 2 रुपए पर एप्लीकेशन के हिसाब से 80 एप्लीकेशंस पे 160 रुपीज एक्स्ट्रा आए थे। ये 160 ऑलरेडी अलॉटमेंट में बोल के हमने एडजस्ट कर लिया ना। तो ये जो 2,000 रुपये उससे आने हैं, किससे? ये कमल से 2,000 रुपये अलॉटमेंट पे। वो अगर पे भी करता तो 2,000 नहीं देने वाला भाई, उसने 160 ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिए हुए। तो हाउ मच ही वॉज सपोज टू पे ऑन अलॉटमेंट? 1840 ही वॉज सपोज टू पे। तो वो 1840 आए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 2,000 रुपये नहीं आए। वो 2,000 में से कुछ अमाउंट ऑलरेडी कंपनी के पास ही है एक्सेस एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में। तो वो तो ऑलरेडी कंपनी के पास है, तो वो तो वैसे भी कमल से आने नहीं थे अब। तो कमल से अभी जितने नेट रिसीवेबल थे उतना ही पैसा नहीं आया। वापिस एक बार, कितने शेयर है उसके? 400। नहीं नहीं, शेयर्स कितने उसके? 400। 400 पे 5 रुपए के हिसाब से अमाउंट ड्यू कितनी हो रही? 2,000। अब उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आया हुआ है वो हम देख रहे हैं। तो जब प्रो रेटा रेशो 6:5 है और उसको 400 शेयर्स अलॉट हुए तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 480। मतलब 80 एप्लीकेशंस पे एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है 2 रुपए के हिसाब से, तो 160 रुपीज एक्स्ट्रा आए हुए हैं। तो वो 160 ऑलरेडी अपने को मिल चुके हैं, तो वो अमाउंट एरियस में है ही नहीं। तो 2,000 रुपये माइनस 180, इट विल बी 1820। 160 ना, 180 नहीं, 160। सो वन इट इज 1840। तो 1840 का अमाउंट एरियर्स में है, इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे। लेस allotment money in arrears on 400 shares held by Kamal. Allotment money due 400 shares into rupees 5. It will be 2,000. Less excess application money 480 एप्लीकेशंस, या 480 माइनस 400 एप्लीकेशंस इंटू 2 रुपीज।
So it is 160. So it is 1840. तो अगर कमल पे भी करता तो 1840 पे करने वाला है, जो पे नहीं हुआ है. Therefore allotment money received 90,160. 90,160. Third working note. First call money received. First call money received. Right hand side corner rupees. First call money due. $20,000 shares into rupees. फर्स्ट कॉल मनी कितना है? 3. 60,000. आई थिंक कमल और तमल दोनों ने भी पे नहीं किया है ना. लेस कॉल्स इन एरियर्स. कमल के कितने शेयर्स है? 400 शेयर्स इंटू ₹3. 1200. तमल 600 shares into ₹3. 1800. So total amount in arrears. Therefore, first call money received. $57,000. Final call money received. Last working note. Final call money received. प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ो बेटा. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कमल के बारे में. कमल ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया एंड ऑन हिज फेल्यूर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड. मतलब कमल के शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद में ही फॉरफिट हो गए. तो कमल के शेयर्स पे सेकंड कॉल होगा ही नहीं. तो अगर ये तुमने अगर इग्नोर कर दिया प्रॉब्लम में दी हुई इन्फॉर्मेशन, तो पूरा सम इसके आगे का रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? तो फिर सेकंड कॉल मनी ड्यू की एंट्रीज गलत हो जाएगी, अमाउंट ही गलत हो जाएगा. तो फाइनल कॉल मनी ड्यू मेरे को बताओ, टोटल शेयर्स कितने थे? उसमें से कमल के पास कितने थे? 400. बोल तो अब वो तो फॉरफिट हो जाएंगे फर्स्ट कॉल के बाद ही. सो 19,600 शेयर्स इंटू ₹2. 39,200. लेस
all scenarios on 600 shares of Tamal. कितना आएगा? 1200 रुपये. Therefore, final call money received 38,000. समझा? सारे वर्किंग नोट समझ में आए? फिर लिखो, in the books of Y Limited journal entries. In the books of Y Limited journal entries. Two pages format. करो start. All of you are ready with the format? चलो. Bank account debit. Bank account debit. Bracket 30,000 applications into rupees 2. 30,000 applications into rupees 2. 60,000 to equity share application account. $60,000 being application money received. Being application money received. इसमें से 12,000 का रिफंड है, वो रिफंड दे दो. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
12,000. To bank account 12,000. Being refund of application money. How much is appropriated towards allotment money due? Allotment money में कितना एडजस्ट हुआ है? 8,000. Entry. Equity share application account debit. Equity share application account debit 8,000 to equity share allotment account 8,000. Being appropriation of excess application money being appropriation of excess application money towards allotment money due. Next, transfer the application money received on shares allotted to equity share capital. Equity share application account debit equity share application account debit bracket 20,000 shares into rupees 2. 20,000 shares into rupees 2. It will be 40,000. To equity share capital account 40,000. Next, equity share allotment account debit equity share allotment account debit bracket 20,000 shares into rupees 5. 1 lakh. 1 lakh to equity share capital account. रुक equity share capital account bracket 1 lakh shares into rupees 3. 20,000 shares मैंने कितने बोले? 20,000 shares into rupees 3. 60,000. To securities premium account bracket 20,000 shares into rupees 2. 40,000 being allotment money due.
being allotment money due. कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है वर्किंग नोट 2 में देखो, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 90,160, बैंक अकाउंट डेबिट 90,160 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,160 being allotment money received. Equity share first call account debit, equity share first call account debit bracket 20,000 shares into rupees 3, $60,000 to equity share first call account 60,000 to equity share capital account 60,000 being first call money due. कितना मिला है वो देखो स्क्रीन पे, 57,000। रिकॉर्ड करो बैंक अकाउंट डेबिट 57,000 to equity share first call account account 57,000 being first call money received, अब सब लोग ध्यान दो, कमल से अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं आया तो उसके शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। अभी मेरे को बोलो कमल के शेयर्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ एट दिस स्टेज कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितनी है? कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपए, अलॉटमेंट के 5 रुपए न रहे कितना भी बोला तो। हाँ फाइनल कॉल नहीं हुआ 2 रुपए का तो 12 रुपए है ना इशू प्राइस, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपए हुई ना। तो प्रीमियम का क्या करना है वो देखेंगे, बट 12 रुपए में से कॉल्ड अप वैल्यू कितनी? 10 रुपए, 2 रुपए का कॉल नहीं हुआ। अब ये जो 10 रुपए की कॉल्ड अप वैल्यू है इसमें से कैपिटल में 8 रुपए गए, 2 रुपए प्रीमियम में गए। अच्छा प्रीमियम किस में था? अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट मनी पे हुआ है क्या? नहीं हुआ है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। बोल तो जो कैपिटल में गए वो तो रिवर्स होंगे ही, प्रीमियम भी नहीं मिला है तो वो भी रिवर्स करना पड़ेगा जो सिक्योरिटीज में गया है। तो फिर अब एंट्री कैसे पास होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स थे वो? 400 शेयर्स इंटू रुपीज 8, 8 रुपए, 3,200। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स इसलिए होगा क्यों, तो ये मिला नहीं है, ये अलॉटमेंट में इंक्लूडेड था और अलॉटमेंट मनी कमल ने पे नहीं किया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 400 शेयर्स इंटू रुपीज 2, 800 टू forfeited shares account
अब अपन रिवीजन बैच में है, ये गलती एक्सपेक्टेड नहीं है, उससे जितने पैसे आए उतने फॉरफिट करने, तो उसने एप्लीकेशन मनी दिया। एप्लीकेशन मनी 400 शेयर्स पे नहीं, 480 एप्लीकेशंस पे आया हुआ है। सो 480 एप्लीकेशंस इंटू ₹2, विच विल बी 960। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट की अमाउंट इन एरियर्स ढूंढी हुई है अपन ने ऊपर, 1840। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1200, being being forfeiture of 200 shares, 400 shares, being forfeiture of 400 shares held by Kamal due to non-payment of non-payment of allotment and call money। अब सेकेंड कॉल मनी ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्या हो गया बेटा, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ना? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 19,600 shares into ₹2, 39,200 to equity share capital account, to equity share capital account 39,200, being second call money final call money due, being final call money due, रिसीव करो, कितना रिसीव हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 to equity share final call account 38,000,
being फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब अब अपने को तमल के शेयर्स फॉरफिट करने हैं। मेरे को बताओ तमल के शेयर्स फॉरफिट करने हैं, तो तमल के शेयर्स तो फुल्ली कॉल्ड अप है, उन पे प्रीमियम मिला है, लेकिन ये तो तमल ने अलॉटमेंट मनी पे किया है, ही हैज नॉट पेड बोथ द कॉल्स। तो अब प्रीमियम रिवर्स होगा क्या? नहीं होगा। बोलो एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ब्रैकेट 600 शेयर्स इंटू रुपीज 10, बरोबर ना? प्रीमियम रिवर्स करूं? नहीं, मिल गया है। टू forfeited shares account, 600 शेयर्स इंटू, गाइस ध्यान दो, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के, ऐसे 7 रुपए मिले, बट 7 में से 2 रुपए प्रीमियम में गए ना, वो हमने रिवर्स नहीं किए। तो हाउ मच अमाउंट यू विल फॉरफिट पर शेयर? 5, 3000, 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1800, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 1200, being forfeiture of, being forfeiture of 600 shares held by Tamal due to non-payment of कॉल मनी। अब टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए? 400, 600, 1000। री इशू कितने हुए हैं? 800। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि कमल के पूरे शेयर्स री इशू करो। नहीं भी बोलते तो भी अपन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही जाते, कमल के ही पूरे री इशू करते। व्हाट इज द री इशू प्राइस पर शेयर? बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर्स इंटू 9 रुपए, क्या 7200, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। बेटा यही कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सब लोग स्क्रीन पे। कमल के सारे शेयर्स री इशू कर रहे हैं आप। कमल का कितना अमाउंट फॉरफिट किए थे आप? 960, तो वो तो पूरा के पूरा ही लेंगे। प्लस तमल का कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 3000 रुपए फॉरफिट हुए थे, बट वो कितने शेयर्स पे? सो डिवाइडेड बाय 600 शेयर्स इनटू 400 शेयर्स। 400 ही री इशू कर रहे हैं उसके। जेपा बोलो बेटा कितना आता है? 2960, 2
equity share capital account, 800 shares into rupees 10, 8,000. 2. Capital reserve, 2,160, 2160, being reissue of reissue of 800 forfeited shares, being reissue of 800 forfeited shares. Done? Any problem, guys? No. Problem number third. Kunal Fortune Limited invited applications for issuing 30,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follows. On application on allotment on first call, on second and final call, the issue was fully subscribed. Arun, to whom 300 shares were allotted, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately after the allotment. Ajit, to whom 450 shares were allotted, failed to pay the first call. His shares were forfeited after the first call. Afterward, the second and final call was made. Mohan, to whom 150 shares were allotted, failed to pay the second and final call. His shares were also forfeited. All the forfeited shares were reissued at rupees 9 per share, fully paid up. Past necessary journal entries in the books of Kunal Fortune Limited. वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं है, क्यों तो ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं, सब्सक्रिप्शन एट पार है, तो कुछ एक्सेस नहीं, रिफंड कुछ नहीं, और जितना जितना अमाउंट एरियर्स में वो तो वहीं के वहीं अपने को एडजस्ट करके शेयर्स फॉरफिट करने हैं. 3 स्टेजेस पे फॉरफीचर है, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद, सेकेंड कॉल के बाद. एंड कंपेरेटिवली बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, प्रीमियम भी नहीं है इसमें. प्रीमियम रहा तो भी थोड़ा सा फिर सोचना पड़ता है. चलो, थर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर 31. In the books of Kunal Fortune Limited, in the books of Kunal Fortune Limited, journal entries, journal entries. Done? Format ready? First entry, bank account debit, bracket 30,000 applications, 30,000 applications into rupee 1, 30,000. 2,
Equity share application account, 30,000. Being application money received, equity share application account debit, 30,000 to equity share capital account, 30,000. Being application money credited to capital, being application money credited to capital, equity share allotment account debit, equity share allotment account debit, bracket 30,000 shares into rupees 2, 60,000 to equity share capital account, to equity share capital account, 60,000. Being allotment money due, being allotment money due, रुक जाओ बेटा, नीचे लिखा है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अरुण टू whom 300 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately after the allotment. 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आया, टोटल शेयर्स 30,000 है जिसमें से 300 शेयर्स पे नहीं आया, बोल तो कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी आया, 29,700. नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 29,700 shares into rupees 3, 2 into rupees 2, 29,700 shares into rupees 2, 59,400 to equity share allotment account, to equity share allotment account, 59,400. Being allotment money received, being allotment money received. गाइस फुल अटेंशन हियर, मेरे पास ध्यान दो, मेरे को बताओ ये जो अरुण के 300 शेयर्स है ये अलॉटमेंट के बाद तुरंत अपन फॉरफिट कर रहे हैं, तो अभी बेटा अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितनी, 3 रुपए, और ये 3 में से 1 रुपया मिला है, 2 रुपए नहीं मिले, तो चलो 3 रुपए जो कॉल्ड अप वैल्यू है रिवर्स करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 300 shares into rupees 3, कितना 900 to forfeited shares account,
2 forfeited shares account, bracket 300 shares into rupee 1, 2 equity share allotment account, bracket 300 shares into rupees 2, 600, being forfeiture of 300 shares held by Arun due to non-payment of allotment money. अब मेरे को बताओ बेटा, ये शेयर्स फॉरफिट होने के बाद कितने शेयर्स बचे? 29,700. तो फर्स्ट कॉल उतने शेयर पे होगा. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, bracket 29,700 shares into rupees 3, 29,700 shares into rupees 3, कितना आता है अमाउंट? 89,100. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 89,100 being first call money due, being first call money due. अब बेटा अगला बंदा है अजीत, जिसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया. अजीत के शेयर्स कितने थे? 450. बोल तो ये जो 29,700 है, इसमें से 450 शेयर्स निकाल दो. 29 तो 29,250 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी मिला. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 29,250 शेयर्स, 29,250 शेयर्स इंटू रुपीज 3, 87,750 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 87,750 being first call money received, अब ये जो अजीत है, इसके 450 शेयर्स इस कॉल के बाद में फॉरफिट हो गए. अजीत ने सिर्फ फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया है, तो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है. अच्छा, उसका कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितना अजीत के शेयर्स का? 6 रुपए. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर
capital account debit, bracket 450 shares into rupees 6, it will be 2700, correct? To forfeited shares account, bracket 450 शेयर्स इंटू रुपीज 3। उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया था ना, 1 रुपए और 2 रुपए, वो तो 3 रुपए तो उससे आए थे। 1350, 1350 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी दिया है उसने, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बोलो बेटा, ब्रैकेट 450 शेयर्स इंटू रुपीज 3, 1350, being forfeiture of being forfeiture of 450 shares held by Ajit, 450 shares held by Ajit due to non-payment of first call money। गाइज इस फॉरफीचर के बाद अब कितने शेयर्स बच गए? 29,250। तो अब सेकंड कॉल उत्ते पे होगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 29,250 शेयर्स इंटू रुपीज 4, 29,250 shares into rupees 4, 1,17,000, 1,17,000 to equity share capital account 1,17,000 to equity share capital account 1,17,000 being second and final call money due, being second and final call money due। अब और एक बंदा पिक्चर में आया, मोहन, जिसके पास 150 शेयर्स थे, उसने पे नहीं किया सेकंड कॉल। बोल तो अब ये जो 29,250 शेयर्स है उसमें से और 150 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। बोल तो कितने शेयर्स में मिला? 29,100 शेयर्स पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 29,100 shares into rupees 4, it will be 116,400 to
टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो गया 116,400 being second and final call money received being second and final call money received अब ये मोहन के 150 शेयर्स भी फॉरफिट करने हैं मोहन ने बेटा सारे कॉल के बाद में फॉरफिट किए शेयर्स उसके मोहन के तो 10 रुपए कॉल्ड वैल्यू है जिसमें से उसने आखिरी के 4 रुपए दिए नहीं है बोल तो पहले 6 रुपए उससे आए थे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 150 shares into rupees 10 1500 two forfeited shares account bracket 150 shares into rupees 6 उसने 6 रुपए दिए समझ में आ रहा क्या 900 to equity share second and final call account bracket 150 shares into 4 600 being forfeiture of 150 shares held by Mohan 150 shares held by Mohan due to non-payment of final call money सर एक बार 10th एंट्री रिपीट करो 10th बोल तो कौन सी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट 29,100 shares into rupees 4 बैंक अकाउंट डेबिट bracket 29,100 shares into rupees 4 116,400 to equity share second and final call account 116,400 हो गया क्या बेटा हाँ अभी जो तुमने एंट्री की बीइंग फॉरफीचर ऑफ 150 shares held by मोहन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी अब रुको ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स 9 रुपए में रीइश्यू किए कितने शेयर्स फॉरफिट हुए पहला था वो कौन अरुण के 300 अजित के 450 बोल तो 750 हो गए और 150 मोहन के 900 तो पूरे के पूरे 900 शेयर्स रीइश्यू करने ऑन रिसीट ऑफ ₹9 पर शेयर बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 900 shares into ₹9 it will be 8,100 8,100 to forfeited shares account debit अभी ब्रैकेट में लिखो ना लाइन से कितने फॉरफिट किए थे इसके अमाउंट अरुण के ₹300
प्लस अजीत के 1350 प्लस मोहन के 900, सो टोटल कितने हो गए वो? 2550, 2550 आया क्या? वापिस बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट 900 शेयर्स इंटू रुपीज 9, 8100। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में ₹300 प्लस ₹1350 प्लस ₹900। तीनों के जो फॉरफिटेड अमाउंट्स थे वो के, तो पूरे के पूरे शेयर्स रीइश्यू हो रहे। 2550 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट 900 shares into ₹10, 9,000 to capital reserve, to capital reserve 1650, to capital reserve 1650। आया सबका? लास्ट प्रॉब्लम इस टॉपिक का। अच्छा, ये बीइंग रीइश्यू ऑफ being reissue of 900 forfeited shares, being reissue of 900 forfeited shares, last problem of this topic. Ambience Limited, second problem, page number 30. Ambience Limited invited applications for issuing 2,25,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹5 per share. The total amount was payable as follows: ₹9 per share, including premium on application and allotment, balance on first and final call. Applications for 9 lakh equity shares were received. Applications for 6 lakh equity shares were rejected and money refunded. Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants. The first and final call was made. The amount was duly received except 4,500 shares applied by Mr. Kabir. His shares were forfeited. The forfeited shares were issued at a discount of ₹4 per share. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Ambience Limited. चलो, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, पेज नंबर 30। वर्किंग नोट्स, एप्लीकेशन मनी डिटेल्स, इसमें जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं होगा, वो कॉल में एडजस्ट होगा। क्यों? तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में आए हैं ना। तो सेकंड लास्ट कॉलम जो है, अप्रोप्रिएशन टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखते हैं हम, उसके बजाय अप्रोप्रिएशन टूवर्ड्स कॉल मनी ड्यू।
What is the amount of application money per share? 9 रुपए ना. सेकेंड लास्ट कॉलम में अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स कॉल मनी. बाहर वो शिवाया क्या करेंगे तो आवाज दें सिर्फ. पानी. हो गया. फॉर्मेट रेडी है. कितने शेयर्स ऑफर हुए? 2,25,000. और एप्लीकेशंस कितने आए? 9 लाख. एप्लीकेशंस फॉर 6 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड. नल. 6 lakhs. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड नील. 9 रुपए के हिसाब से 54 lakhs रुपीज मिले. एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड नील. एक्सेस पूरे पूरे एक्सेस है ना. कैन यू एडजस्ट इट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, टुवर्ड्स कॉल? अलॉटमेंट हुआ ही नहीं तो कहां से करेंगे? रिफंड 54 lakhs. नेक्स्ट कैटेगरी इज हाउ मेनी शेयर्स आर अप्लाइड. कितने अलॉट किए? 225. क्या रेशियो आता है? 4:3. फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड 3 शेयर्स विल बी अलॉटेड. 3 लाख के बदले में 2,25,000. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विल बी 27 lakhs. Application money on shares allotted 20 lakhs 75,000. 25,000. How much excess? 675. 6,75,000. सब लोग मेरे पास ध्यान दो. कितने शेयर्स तुमने अलॉट किए इस कैटेगरी में? 2,25,000. और उस पे फिर कॉल मनी पर शेयर 6 रुपए. देखो इशू प्राइस 15 रुपए है बेटा, 5 रुपए प्रीमियम पे बोल के. तो 9 रुपए अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के आए तो बचे हुए 6 रुपए कॉल पे. तो 6 रुपए ड्यू हो रहे कॉल पे, तो 13,50,000 ड्यू हो रहे. तो आप पूरे के पूरे 675 एडजस्ट कर सकते हैं ना. 6,75,000. रिफंड नील. टोटल 9,225,000. 81 lakhs.
20,25,000, 61, 60, 75,000 एक्सेस, बरोबर ना. टुवर्ड्स कॉल 675 and refund बरोबर आहे. सेकंड वर्किंग नोट, कॉल मनी रिसीव्ड. सेम वर्किंग है बेटा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड वाला, सिर्फ यहाँ पे कॉल मनी है. राइट हैंड साइड कॉर्नर रुपीज. How many shares are allotted? Into rupees 6. It will be 13,50,000. Less appropriation of excess application money. ₹6 lakhs. Balance 675. सब लोग चेक करो प्रॉब्लम में क्या लिखा है, कितने शेयर्स पे कॉल मनी नहीं आया. ऑन 4,500 शेयर्स अप्लाइड बाय कबीर. अप्लाई उसने 4,500 शेयर्स को किया है, अलॉट नहीं हुए उतने. He had applied for 4,000. ये ना, एक देखो, एक वर्ड इग्नोर हो गया तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी. 4,500 शेयर्स उसके पास है नहीं, उसने अप्लाई 4,500 शेयर्स को किया था. समझा क्या? लेस कॉल्स इन एरियर्स ऑन, बोलो, 4,500 उसने अप्लाई किए थे, तो 4:3 रेशियो में उसको अलॉट कितने हुए? 3,375. So calls in arrears on 3,375 shares held by कौन है? कबीर. Allotment money due, call money due, sorry. 3,375 shares into rupees 6. 20,250 less excess application money. ये देखो ब्रैकेट में 4,500 एप्लीकेशंस आए, तुमने अलॉट किए 3,375, तो कितने एक्सेस है? 1,125 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा है, उस पे 9 रुपए आए हुए. तो 10,125 ऑलरेडी एक्सेस आया हुआ है. What is the amount in arrears? 10,125.
and therefore call money received will be 6 lakhs 64,875. 664,875. चलो वर्किंग नोट्स हो गए. लिखो. In the books of Ambience Limited journal entries. In the books of Ambience Limited journal entries. करें स्टार्ट. पहली एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट bracket 9 lakh applications into rupees 9 lakh applications into rupees 9 81 lakhs 81 lakhs to equity share application and allotment account to equity share application and allotment account. साथ में आया क्या तो पैसा 81 lakhs. Being application money received, being application money received कितना रिफंड है इसमें से 54 lakhs. Equity share application and allotment account debit 54 lakhs equity share application and allotment account debit 54 lakhs to bank account 54 lakhs being refund of application money. How much amount is appropriated towards call 6,75,000. Equity share application and allotment account debit equity share application and allotment account debit 6,75,000 to
equity share call account. 6,75,000 being appropriation of appropriation of excess application money, being appropriation of excess application money towards call money due, equity share application and allotment account debit, equity share application and allotment account debit bracket 2,25,000 shares, 2,25,000 shares into rupees 9, 20,25,000, 20,25,000 to equity share capital account, bracket 2,25,000 shares into rupees 4, 9 lakhs into rupees 4, 9 lakhs, क्यों तो 5 रुपए प्रीमियम के है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, bracket 2,25,000 shares, 2,25,000 shares into rupees 5, it will be 10,25,000 ना, प्रीमियम में 11,25,000, 11,25,000 being allotment of shares, next equity share call account debit bracket 2,25,000 shares into rupees 6, it will be 13,50,000 to equity share capital account 13,50,000 being call money due, रिसीव कितना हुआ वर्किंग नोट में है सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट 664,875 to equity share call account 664
875. Being call money received. आफ्टर दिस गाइज, जो 3375 शेयर्स है जिसके ऊपर कॉल मनी नहीं दिया कबीर ने, वो शेयर्स फॉरफिट करने हैं अपने को. नाउ दिस शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप एंड एनीवे ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी. बोलता है प्रीमियम भी आया था, तो प्रीमियम रिवर्स होगा क्या? नहीं होगा. तो अब अपने को फॉरफीचर की एंट्री करनी है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 3375 shares into rupees 10, correct. 33,750. प्रीमियम रिवर्स होगा क्या? नहीं होगा, क्यों? तो मिल चुका है. टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. यहां पे मिस्टेक के चांसेस है, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो. गाइज, वी फॉरफिट द अमाउंट रिसीव्ड अदर देन प्रीमियम ऑन शेयर्स अलॉटेड. प्रीमियम भले ही पूरे एप्लीकेशन पे मिला था, बट जितने शेयर्स अलॉट किए उसी पे प्रीमियम हमने रिकॉर्ड किया ना बुक्स में. तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो. फॉरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंस जाने वाला है? तो लुक एट द स्क्रीन. ही हैड अप्लाइड फॉर 4500 एप्लीकेशंस इनटू पर शेयर कितने दिए थे उसने? 9 रुपए, बराबर ना? पर एप्लीकेशन 9 रुपए दिए थे. इसमें से लेस प्रीमियम एट द रेट ऑफ ₹5 per share on how many shares? 3375 allotted shares. समझा क्या? प्रीमियम हमने 3375 पे ही रिकॉर्ड किया है बुक्स में. मिला अपने को पूरे अमाउंट पे था, बट बुक्स में हमने लेते वक्त तो जितने अलॉट किए उसी पे लिया ना. बाकी का अमाउंट पूरा फॉरफिट होगा. कितना आता है देखो. 23,625. टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट. कॉल की अमाउंट कितनी है एरियर्स में? 10,125. आया? being forfeiture of 3375 shares held by Kabir, being forfeiture of 3375 shares held by Kabir due to non-payment of call money. आया? अब ये सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हुए एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर. बोल तो 6 रुपए में. लास्ट एंट्री बोलो.
बैंक अकाउंट डेबिट 3375 shares into rupees 6, 20,250. Forfeited shares account debit 23,625. To equity share capital account bracket 3375 shares into rupees 10, 33,750 आ रहा है क्या? टू बोलो 10,125, 10,125. इशू ऑफ शेयर्स इज ओवर. सारे पांचों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया अपन ने. रेगुलर बैच प्लस ये बैच, इतना प्रैक्टिस होने के बाद में अब गलती होनी नहीं चाहिए बेटा. बहुत प्रैक्टिस हो गया अब इन चीजों का. ये एंट्री समझे सबको फॉर फ्यूचर इशू लास्ट प्रॉब्लम के? एवरीवन? नाउ राइट डाउन redemption of preference shares. Redemption of preference shares. इसी टॉपिक में अपन बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स भी कवर कर लेंगे, अलग से नहीं लेंगे वो, कि तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के साथ बोनस अटैच्ड ही है. कि तो आप लोग को अगर धुंधला सा भी याद आ रहा है थोड़ा सा भी, तो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में सीआरआर क्रिएट होता है. और सीआरआर का एक ही यूज है और वो है फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. तो बोनस शेयर्स ऑटोमेटिकली इसी के साथ आने वाले, इसी के प्रॉब्लम्स में अपने को बोनस देखने को मिल जाएंगे. गाइस दो टाइप के शेयर्स जो आज तक अपन ने सीखे. देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. अब ये जो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप के शेयर्स है, इन दोनों में का प्राइमरी डिफरेंस क्या है वो पहले समझ लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइमरी डिफरेंस इन दिस टू. फंडामेंटली इन दोनों में क्या फर्क है? ओनर्स तो दोनों है कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनर्स ही होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी ओनर्स ही होते हैं, बट फर्क क्या है? तो इक्विटी कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज इक्विटी कैपिटल का रीपेमेंट जो है यूजुअली इट हैपन्स ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. whereas प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अपन जानते हैं द मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड बाय सेबी इज 20 years. 20 साल से ज्यादा आप प्रेफरेंस शेयर्स रख भी नहीं सकते. 20 साल के बाद क्यों ना हो तुमको रिडम्पशन करना ही पड़ेगा. सो द मैक्सिमम लाइफ फॉर प्रेफरेंस शेयर्स इज 20 years, whereas equity capital can be continued
फॉरएवर टिल द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. कंपनी जब तक है तब तक इक्विटी कैपिटल कंटिन्यूड है. So equity capital is permanent source of finance. Preference capital is medium or long-term source of finance. Rate of equity dividend is fluctuating. It is not fixed. Company may or may not pay equity dividend. Company may or may not pay equity dividend. Pay भी किया तो कितने रेट से पे करेंगे फिक्स नहीं होता. But as far as preference shares are concerned, preference shareholders get preference dividend at fixed rate. Fixed rate of dividend is paid to preference shareholders. Equity shareholders have full voting rights. Preference shareholders have restricted voting rights. Preference shareholders के restricted voting rights है as compared to equity shareholders. Before payment of any kind of equity dividend, compulsorily preference dividend needs to be paid. And that's why one of the reasons why we called preference shares as preference shares. डिविडेंड पेमेंट की जब बात आएगी, जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं होता तब तक इक्विटी डिविडेंड पे नहीं कर सकते आप. तो आपको कंपल्सरीली कंपनी को पहले प्रेफरेंस डिविडेंड ही पे करना पड़ेगा, उसके बाद में ही इक्विटी डिविडेंड पे होगा. आप सब लोग इधर बैठे हुए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इधर बैठे हुए इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो इनको कोई भी पेमेंट करने के पहले डिविडेंड का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होना जरूरी है. उसके बगैर इक्विटी डिविडेंड दे नहीं सकते. सिर्फ डिविडेंड पेमेंट में ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और एक प्रेफरेंस मिलता है इन केस ऑफ कैपिटल रीपेमेंट. जब कभी कंपनी लिक्विडेट होगा या कंपनी अगर किसी वजह से बंद हो रहा है, उसमें कैपिटल रीपेमेंट की बात आई, तो जब तक प्रेफरेंस कैपिटल पूरा पे नहीं हो जाता तब तक इक्विटी कैपिटल का रीपेमेंट नहीं हो सकता. तो अगेन देयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट द प्रेफरेंस एज फार एज रीपेमेंट इज कंसर्न, कैपिटल रीपेमेंट इज कंसर्न. तो दो जगह पे प्रेफरेंस मिल रहा है. कहाँ कहाँ पे? डिविडेंड पेमेंट में और दूसरा कैपिटल रीपेमेंट में. डिविडेंड पेमेंट एंड कैपिटल रीपेमेंट, इन बोथ these situations preference shareholders will get preference over equity shareholders, and that's the reason we call those shares as preference shares. इनको preference shares बोलते हैं. अब अभी मैंने पहला पॉइंट समझाते वक्त बोला कि प्रेफरेंस कैपिटल जो है इसका मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड 20 साल का है. मतलब 20 साल बाद क्यों ना हो उसको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा. तो ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, इसको लेके स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट की सेक्शन 55 में दी हुई, और वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपको कंपल्सरीली कंप्लाई करनी पड़ती है. देन ओनली यू कैन रिडीम योर प्रेफरेंस शेयर्स. अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स कांट बी रिडीम्ड. रिडम्पशन नहीं हो सकता. 5 कंडीशंस है प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के. इन टोटल देयर आर 5 conditions, and compulsorily all those 5 conditions you need to comply with, then only you can redeem your preference shares. Other unless and until you comply with these 5 conditions, आपका redemption हो ही नहीं सकता. वो 5 conditions कौन से? Which are those 5 conditions? मैं पहले बता देता हूँ 5 conditions, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं. अब लिखाते नहीं बैठूंगा मैं, वो बहुत लंबे हैं, अननेसेसरी टाइम जाएगा. और रिसेंटली अभी छुआ है अपने को रेगुलर बैच में. 5 कंडीशंस कौन से? तो फर्स्ट कंडीशन इज द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड मस्ट बी फुल्ली पेड अप. मैं सारे कंडीशन, सारे जो ये 5 कंडीशन से डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले सुन लो. द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड मस्ट बी फुल्ली पेड अप, पहला कंडीशन. सेकंड कंडीशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मे बी प्रोवाइडेड आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी or out of proceeds of fresh issue of shares. Third condition is nominal value of preference shares redeemed out of profits of the company should be transferred to CRR, capital redemption reserve. Fourth condition is the balance in CRR can be utilized only and only for issuing fully paid bonus shares. And the last condition is premium payable on redemption of preference shares may be provided either out of profits of the company or out of balance in securities premium. ये 5 कंडीशन सेक्शन 55 में दिए हुए which you need to comply before you redeem your preference shares. One by one let's go for dissection of these conditions. एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. पहला कंडीशन बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड मस्ट बी फुल्ली पेड. जब तक तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड नहीं हो जाते तब तक तुम उनका रिडम्पशन नहीं कर सकते.
प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ध्यान रखना, अपन बेटा अभी रिवीजन बैच में बैठे नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। अगर रिडम्पशन पे क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में अगर तुम देखते हो कि पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है, तो कंपल्सरीली बेटा पहले कॉल करना पड़ेगा बचे हुए अमाउंट का, कॉल करके वो पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, और उसके बाद में रिडम्पशन हो सकता है। इट इज अ कंपल्शन अंडर कंपनीज एक्ट दैट प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड मस्ट बी fully paid. So unless and until the preference shares are fully paid, you can't redeem those preference shares. So make sure that when you go for redemption entries, when you go for accounting of redemption of preference shares, श्योर कर लो कि दिया हुआ जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो फुल्ली पेड है या नहीं है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, अगर फुल्ली पेड नहीं है तो पहले कॉल करके उनको फुल्ली पेड बनाओ, फुल्ली पेड होने के बाद ही उनका रिडम्पशन करो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, redemption of preference shares should be provided either out of profits of the company or out of proceeds of fresh issue of shares। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि रीपेमेंट हो रहा है। रीपेमेंट हो रहा है तो कंपनी के पास उतने सोर्सेस चाहिए ना, फंड्स चाहिए ना रीपेमेंट करने के लिए। तो सेक्शन 55 ने दो ही सोर्सेस अलाउ किए फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, एंड ये जो प्रॉफिट्स टर्म है यहाँ पे, दीज आर डिविजिबल प्रॉफिट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। डिविजिबल रेवेन्यू वन एंड द सेम। डिविजिबल का मतलब विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ऐसे प्रॉफिट जो डिविडेंड बोल के दे सकते वो, उनको डिविजिबल या रेवेन्यू प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो जितना भी कुछ रिडम्पशन का अमाउंट है, एटलीस्ट उतना तुम्हारे पास प्रॉफिट्स होने चाहिए, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, और यू शुड मेक अ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स का नहीं चलता। फ्रेश इश्यू, हाँ शेयर्स जो है वो फिर कोई भी हो सकते, इक्विटी शेयर्स भी हो सकते, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। सो देयर आर ओनली टू सोर्सेस गिवन फॉर प्रोवाइडिंग फॉर फंड्स रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आइदर आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। थर्ड कंडीशन सेज, थर्ड कंडीशन, जितना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी कर रहे हो, दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड गो टू सीआरआर। उतने प्रॉफिट्स तुमने सीआरआर को ट्रांसफर करने चाहिए। चौथा कंडीशन बोलता, द बैलेंस इन सीआरआर कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली एंड ओनली फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स के लिए तुम वो यूज कर सकते हो सीआरआर। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे अपन, पहले ये समझ लो 5 कंडीशन, फिर और देखते क्या उसमें और किस क्या क्या इस पे फोकस करना है अपने को। एंड द फिफ्थ कंडीशन सेज प्रीमियम पेएबल ऑन redemption of preference shares should be provided either out of profits of the company or out of balance in securities premium। जरूरी नहीं है बेटा कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल ऑलवेज बी एट पार, इट मे बी एट प्रीमियम ऑल्सो। तो अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम पे होने वाला है, समझो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, तो 10 रुपए ऊपर के देने हैं ना। तो ये जो 10 रुपए ऊपर के देने हैं, तो वो कहाँ से आएंगे? तो या तो तुम्हारे पास प्रॉफिट्स होने चाहिए, मतलब ये रेवेन्यू प्रॉफिट्स, और यू कैन यूज इट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन अगर आपको रेगुलर बैच का डिस्कशन याद आ रहा है, नहीं भी याद आ रहा है, तो अभी याद रखना, अभी बता रहा हूं मैं आपको। अगर अगर कंपनी सेक्शन 133 कंप्लायंट कंपनी है, 133 कंप्लायंट कंपनी बोल तो which is preparing and presenting the financial statements as per the accounting standard prescribed under section 133 of Companies Act 2013, it cannot provide premium payable on redemption of preference shares out of securities premium। तो securities premium वाला ऑप्शन ऐसे कंपनीज के लिए नहीं है। एंड मैं आपको बता चुका हूं कि आईसीआई ने जितने सम्स इसके ऊपर कवर किए, इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने, सारे के सारे सम्स में assumption यही है that these companies are section 133 compliant companies। ये सारे के सारे कंपनीज सेक्शन 133 कंप्लाई कर रहे हैं, और उस वजह से फिर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से प्रोविजन नहीं किए। बट ऑप्शन है, अगर सेक्शन 133 कंप्लाइंट नहीं है कंपनी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम में से भी दे सकते हो। ये जो मैंने 5 कंडीशंस बताए, इनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। वो चार्ट अपन ने रेगुलर बैच में भी बनाया है, बट फिर से समझते हैं। लेट्स से बेटा
there are 10,000 preference shares of rupees 100 each. Redeemable at 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे। तो मेरे को बताओ टोटल रिडम्पशन वैल्यू कितनी? टोटल रिडम्पशन वैल्यू 11 लाख। ये जो टोटल रिडम्पशन वैल्यू है 11 लाख की, लेट्स डिवाइड इट इन टू पार्ट्स। नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब अपने एग्जांपल में बेटा नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। अब कंडीशन वाइज समझने जाए तो ये जो नॉमिनल वैल्यू 10 लाख रुपए है, इसका प्रोविजन कहां से होगा? तो इसके लिए कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन। एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए कंडीशन नंबर 5। तो कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? ये 10 लाख का प्रोविजन करने के लिए आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ
fresh issue of shares, out of proceeds of fresh issue of shares. Look at the screen guys, यहाँ पे ये रेवेन्यू प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है एंड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट है, शेयर्स का फ्रेश इश्यू होना चाहिए. As far as premium on redemption is concerned, इस प्रीमियम को प्रोवाइड करने के दो सोर्सेस है अपने पास. आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी and out of balance in securities premium, out of balance in securities premium. चलो फिर से एक बार समझो, मेरे को बताओ व्हाट इज द टोटल रिडम्पशन वैल्यू. 11 lakhs, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट नॉमिनल वैल्यू 10 लाख एंड प्रीमियम पेएबल 1 लाख. ये जो 10 लाख का नॉमिनल वैल्यू है इसकी प्रोविजन करने के लिए दो सोर्सेस, आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एंड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स. और जो प्रीमियम पेएबल है उसके लिए दो ऑप्शंस है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब बेटा जितना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हो रहा है उतना नॉमिनल वैल्यू शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट्स टू सीआरआर. इतना अमाउंट सीआरआर में जाना चाहिए. इट शुड गो टू सीआरआर. तो समझो 10 लाख का टोटल नॉमिनल वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन का. नॉमिनल वैल्यू बोल रहा हूं मैं, 10 लाख है. उसमें से फ्रेश इशू समझो 6 लाख रुपए हुआ है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए. फिर आउट ऑफ प्रॉफिट 4 लाख रहेगा. तो 4 लाख रुपए के जो प्रॉफिट्स का बैलेंस है दैट शुड गो टू सीआरआर. इट शुड गो टू सीआरआर. वैसे ही चार्ट कंप्लीट करने के लिए अभी जो मैं समझा रहा था, सेक्शन 133 कंप्लायंट कंपनीज के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल. It is not permitted if companies complying with section 133 of Companies Act 2013. अगर रेगुलर बैच अच्छे से किया है, अभी रिवीजन में अच्छे से ध्यान दिया है, तो मुझे लगता है कि इतना चार्ट देखते ही सब कुछ वापस से रिकॉल हो जाना चाहिए कि क्या क्या था. राइट, लिख लिया. नीचे लिखो, it is important to note that
it is important to note that in all the problems covered by ICAI, comma, it is assumed that it is assumed that the companies redeeming preference shares companies redeeming preference shares are complying with section 133 are complying with section 133 of Companies Act and accordingly premium payable on redemption and accordingly premium payable on redemption is provided out of profits of the company profits of the company and not out of securities premium and not out of securities premium. फिर से एक बार क्या क्या 5 कंडीशंस थे. First condition, preference shares to be redeemed must be fully paid. Second condition, redemption of preference shares, second condition यहाँ पे लिखा है अपन ने, redemption of preference shares may be provided either out of revenue profits of the company or out of proceeds of fresh issue of shares. Third condition, nominal value of preference shares redeemed out of profits of the company should be transferred to CRR. Then balance in CRR can be utilized only and only for issuing fully paid bonus shares. And very important, premium payable on redemption of preference shares may be provided either out of profits of the company or out of balance in securities premium, but we are not going to use it. We will be making it out of profits of the company. Any problem, guys? समझा? पक्का? Sure? 5 मिनट लगेंगे. एंट्रीज लिख लेते क्या? बोनस भी कवर हो जाता है फिर. याद तो रहेंगे तुमको एंट्रीज, बट लिख लिए तो एक बार हाथ के नीचे से चला जाएगा. अकाउंटिंग एंट्रीज, accounting entries. Number 1, for provision for provision for
premium payable for provision for premium payable on redemption of preference shares, on redemption of preference shares. सामने चार्ट में देखो और बताओ कि किस में से प्रोविजन करेंगे अपन। आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से ही करेंगे। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम पेबल, टू प्रीमियम पेबल on redemption account, to premium payable on redemption account. Next, transfer of profits to CRR, transfer of profits to CRR. वही सारे हेड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, टू CRR अकाउंट. Serial number 3, for transfer of amount due on redemption, for transfer of amount due on redemption. Preference share capital account debit, preference share capital account debit, premium payable on redemption account debit, premium payable on redemption account debit, to preference share holders account, to preference share holders account. Next, payment of amount due on redemption, payment of amount due on redemption. बोलो preference share holders account debit, preference share holders account debit to bank account,
Next very important entry, provision for bonus issue of shares. सब लोग मेरे पास ध्यान दो। बोनस शेयर्स का मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स आर शेयर्स allotted by a company to the existing shareholders without any additional consideration for such shares. कंपनी के प्रॉफिट्स किसके होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के। एब्सोल्युटली राइट। कंपनी के प्रॉफिट्स किसके होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो वो प्रॉफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग तरीके हैं। वन ऑफ द वेज इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड दे सकते हैं आप। डिविडेंड देने में लेकिन क्या होता है? कैश आउटफ्लो आ गया। समझो समझो, 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 1 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, 1 करोड़ रुपए कैश में भी तो जाएंगे ना, फिर पेमेंट है ना, उतना लिक्विडिटी कम हो जाएगा कंपनी का। उसके बजाय कंपनी को अभी उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए पैसे लगने वाले हैं, तो कंपनी बोलता है कि एक काम करते हैं, शेयर होल्डर्स को देना है ना पैसा अपने को, डिविडेंड नहीं देंगे, बोनस के फॉर्म में देंगे, बोनस शेयर्स दे देंगे। बोनस शेयर्स देने का फायदा, बहुत बड़ा फायदा है। एक तो कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ना इज ऑलवेज अ गुड साइन। इतना कैपिटल ज्यादा रहेगा उतना तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा है, साउंड पोजीशन है। तो बोनस इशू कर देते हैं। बोनस इशू करने से क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकली शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेरे को बोनस शेयर्स मिले तो मैं बोनस दिया कंपनी ने। और दूसरा, कंपनी को आउटफ्लो नहीं ना, कंपनी को तो सिर्फ क्या करना है? बुक एंट्री पास करके प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो अब तुमको बैलेंस शीट की भी आइडिया है कंपनी के, तो रिजर्व एंड सरप्लस में से उठा के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, इतना करना है ना। तो आउटफ्लो नहीं है। डिविडेंड बोला तो आउटफ्लो आया, बोनस में आउटफ्लो नहीं है। तो किसके प्रॉफिट से? इक्विटी शेयर होल्डर्स के। दे रहे किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दिया जाता है, तो बोनस मन में आया तब दे दिया ऐसा नहीं होता, उतने प्रॉफिट चाहिए ना कंपनी के पास बोनस देने के लिए। क्या क्या यूज कर सकता है कंपनी बोनस के लिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम इज वन ऑफ द ऑप्शंस। अभी हमने देखा सीआरआर, ये अभी इस कंडीशंस में सीआरआर का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ बोनस के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सीआरआर है, फिर बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट्स तो है ही, जो तुम्हारे एनीवे डिविडेंड बोल के तुम दे सकते हो, वो तो तुम यूज कर ही सकते हो बोनस के लिए। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल दीज हेड्स आर अवेलेबल टू बी गिवन एज बोनस टू द शेयर होल्डर्स। सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए बोनस इशू के लिए? कौन से फंड्स पहले यूज करेंगे? सबसे पहले सीआरआर। क्यों? तो उसका एक ही यूज है फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। उसका एक ही यूज है तो पहले वो यूज कर लो। सेकंड, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम इसलिए कि तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी रिस्ट्रिक्टेड यूज ही है, 5 यूजेस है उसके भी। वही ये 5 में से कोई भी अगर पर्पज है तो पहले वही यूज करना चाहिए फिर। तो सबसे पहले यूज करेंगे सीआरआर, फिर यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फिर जरूरत पड़ी ये दोनों के बावजूद तो फिर अपन ये जो फ्री रिजर्व्स है, डिविजिबल प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स है, दोज वी विल बी यूटिलाइजिंग, राइट। तो जो प्रोविजन होगी ये इन्हीं हेड्स में से होगी, इसी सीक्वेंस में होगी। लिखो, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
Revenue reserves account debit. Two, bonus to shareholders account. Two, bonus to shareholders account. Last, allotment of bonus shares. Allotment of bonus shares. Bonus to shareholders account debit. Bonus to shareholders account debit. To equity share capital account. To equity share capital account. Done? Any problem? छोटे छोटे से सम्स है, दो सम्स तो हो जाएंगे आज लगता है मेरे को, छोटे छोटे से सम्स है, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा. पेज नंबर 33, प्रॉब्लम नंबर 1. ऐसे तुम्हारे रिजल्ट के दिन ऐसा खुशी भर भर के ऐसे बाहर दिखनी चाहिए मेरे को. एक एक के स्कोर देखे तो किसी को 84 मार्क्स है अकाउंट्स में, किसी को 87 मार्क्स है, 90 प्लस है, 70 प्लस है, ऐसे मार्क्स दिखने चाहिए सबके. तो भाई ये सब इतने मेहनत का कुछ फायदा है. पिछले 7-8 सालों में संडे को लेक्चर लिया हुआ याद नहीं आता मेरे को. पिछला संडे भी लेक्चर लिया है, इस आज भी संडे में लेक्चर ले रहा हूँ तुम्हारा. लिया नहीं मैंने पिछले 7-8 साल में, तुम्हारे बैच में मेरे को नहीं लगता कभी मैंने लिया संडे को लेक्चर. लिया नहीं मैंने, आता ही नहीं मैं, कुछ भी हो जाए. सिर्फ तुम्हारे रिवीजन बैच टाइम पे खत्म हो, तुमको टाइम मिले बोल के ले रहा हूँ. मेरे घर पे भी सब सरप्राइज है. पापा सर भी बोले आज कहाँ जा रहा, मतलब क्लास है. क्लास संडे को, बैच खत्म करता हूँ जल्दी. फायदा होना चाहिए इसका भाई. फर्स्ट प्रॉब्लम, the extract of balance sheet of Hariom Limited as on 31st March 2024 is as follows. Page number 33 पे first problem. Particulars, equity and liability, shareholders fund, share capital, reserves and surplus assets, non-current assets, PPE and intangible assets, PPE, non-current assets, non-current investments. Share capital, authorized share capital, 40,000 equity shares of 10 each fully paid, 1,008% preference shares of 100 each fully paid up. Issued, subscribed, called up and paid up, 1,008% preference shares of 100 each fully paid. तो जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो फुल्ली पेड है. 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up. रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम P&L अकाउंट. In order to redeem its preference shares, company issued 5,000 equity shares of 10 each at a premium of 10% and sold its investment of 70,800. Preference shares were redeemed at a premium of 10%. Show the necessary journal entries in the books of the company. लिखो. In the books of Hariom Limited, in the books of Hariom Limited, journal entries.
करो स्टार्ट। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए पहला कंडीशन, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड मस्ट बी फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड है, तो वो तो प्रॉब्लम है नहीं। फ्रेश इशू हुआ है बेटा और इन्वेस्टमेंट्स बेचे है। चलो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री करते हैं पहले। बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट्स की? 60,000। कितने में बेचे? 70,800। वो तो प्रॉफिट में बेचे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, 70,800, 70,800 to investment account 60,000 to profit and loss account 10,600, 800 to profit and loss account 10,800, being sale of investments, being sale of investments, अब इसके बाद फ्रेश इशू हुआ है। कितने इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू हुआ है? 5,000। एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, बट एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बोले तो 11 रुपए में इशू हुआ है। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट 10,000 शेयर्स इंटू ₹11, 5,000 शेयर्स है, सॉरी 5,000 शेयर्स इंटू ₹11, 55,000 to equity share application and allotment account, to equity share application and allotment account, 55,000, 55,000 being fresh issue of shares. Mauli Sainath, being fresh issue of shares. अब अलॉटमेंट की एंट्री करो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 55,000 to equity share capital account, to equity share capital account 50,000, 50,000 to securities premium account 5,000, being allotment of fresh shares. मैं आपको बेटा एंड में एक छोटा सा वर्किंग नोट दूंगा, एंड में याद करना मेरे को, बट अभी आप ओरली समझो। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड? 1 लाख।
अब इसमें से रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कितना? एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मैं जानता हूँ 55,000 है, बट वो 55,000 में से 5,000 कहाँ गए? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। कैन यू यूज दैट फॉर नॉमिनल वैल्यू? नहीं यूज कर सकते उसको अपन। तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू कितना? 50,000 ही है। तो व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड? 1 लाख लेस रिडम्पशन आउट ऑफ proceeds of fresh issue 50,000, and therefore redemption out of profits of the company will be 50,000. तो CRR में कितना जाएगा? 50,000 जाएगा। बैलेंस है क्या अपने पास? लेकिन P&L में कितना बैलेंस है? ये 55,000 है, प्लस वो इन्वेस्टमेंट बेच के 10,800 गया ना, तो 65,800 का बैलेंस है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि तो रिडम्पशन जो हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम की भी तो प्रोविजन करनी है, एंड प्रीमियम की प्रोविजन वापस P&L में से ही होने वाली है कि तो सेक्शन 133 कंप्लायंस, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रहते हुए भी यूज नहीं कर सकते। अब प्रीमियम कितना है? 10%। बोल तो 1 लाख का 10%, बोल तो 10,000 तो प्रीमियम जाएगा। लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, profit and loss account debit 10,000 to premium payable on redemption account, to premium payable on redemption account being provision for premium payable on redemption हो गया। Then profit and loss account debit 50,000, 50,000 to capital redemption reserve account, to capital redemption reserve account 50,000 being provision for redemption out of profits of the company, being provision for redemption being provision for redemption out of profits of the company. Next, 8% redeemable preference share capital account debit, 8% redeemable preference share capital account debit 1 lakh, 1 lakh premium payable on redemption of preference shares account debit 10,000 to preference shareholders account 1 lakh 10,000.
being amount due on redemption, being amount due on redemption. पे कर दो, लास्ट एंट्री क्या होगी एंट्री? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,10,000 to bank account 1,10,000, being payment of amount due on redemption, being payment of amount due on redemption. हो गया? That's it, finished. Working note, छोटा सा वर्किंग नोट. ascertainment of profits to be transferred to CRR. Ascertainment of profits to be transferred to CRR. Right hand side corner rupees. Nominal value of preference shares to be redeemed. कितना? 1 lakh. Less redemption out of proceeds of fresh issue of shares. Less redemption out of proceeds of fresh issue of shares. 50,000. Therefore, redemption out of profits of the company. Therefore, redemption out of profits of the company $50,000. Next line, therefore profits to be transferred to CRR. Therefore profits to be transferred to CRR 50,000. हो गया? Sixth sum. Sixth. Susheel Limited had 10,000 10% redeemable preference shares of 100 each fully paid. Company had to redeem these shares at a premium of 10%. It was decided by the company to issue the following
80,000 equity shares of 10 each at par, 4,000 12% debentures of 100 each. The issue was fully subscribed and all accounts were received in full. Payment was duly made. Company had sufficient profits. Show journal entries in the books of the company. इसमें ये समझना है इस प्रॉब्लम में फ्रेश इशू शेयर्स का भी है डिबेंचर्स का भी है, तो एंट्री तो करनी पड़ेगी उसकी, बट वो अपने को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं है. लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 36. जल्दी खत्म हुआ तो भी अगला सम नहीं लूंगा, जल्दी खत्म होगा भी, डोंट वरी. कुछ नहीं, 5-6 एंट्रीज है सिर्फ. इन द बुक्स ऑफ सुशील लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. अच्छा, कल का टाइमिंग क्या फाइनल हुआ? तुम्हारा टेस्ट है कल, इसलिए 9 से 12 कन्वीनियंट है. फिर बाद में खाना खा के लॉ का टेस्ट दोगे बराबर. लॉक कर दो 9 से 12. टेस्ट है ना कल? मेरे को लगता है परसों लास्ट लेक्चर रहेगा अपना, बिकॉज आफ्टर वी फिनिश दिस, ये कल घंटे भर में हो जाना चाहिए. आई विल स्टार्ट विथ रिडम्पशन, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, देन उसको कल समझाने का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. और ट्यूसडे को भी 3 घंटे नहीं लगेंगे, हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा ऐसे लगता है मेरे को, तो खत्म हो जाएगा. तो परसों तो दोपहर में लेंगे, लेकिन परसों सवेरे मुझे पॉसिबल ही नहीं है. यस. मैथ्स का सर बताएंगे भाई जो. आज नहीं है ना मैथ्स, सर का भी इंटर तो चालू है. हो गया बोले ऐसा तो 2-3 ही लेक्चर लगने वाले हैं अभी. हम्म. लिमिट्स बाकी है. लिखो, इन द बुक्स ऑफ सुशील लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. चलो पहले फ्रेश इशू करो. बैंक अकाउंट डेबिट. अच्छा, फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया, करो करो करो. बहुत टाइम है अपने पास, आराम से. आज अच्छे से लॉ की पढ़ाई करो, कल टेस्ट देना है तो. कितने लोगों ने वो फॉलो किया? मैंने बोला हुआ कि रोज के 3 केस स्टडीज वाला फंडा. किसी ने भी नहीं. वो किया फॉलो? नहीं नहीं, केस स्टडीज लिखने के लिए भी मैंने एक बार बोला था, रोज के 3 केस स्टडीज लिखा करो बोल के, लॉ के, प्रैक्टिस होगी उससे. वो नहीं लिखे. टाइम नहीं था उसके लिए. लॉ में फेलियर मैक्सिमम टाइम सिर्फ राइटिंग नहीं जमता बोल के चाहता, और इसीलिए वो जरूरी है रोज के 3 केस स्टडीज लिखना. तुम देख के लिखो भले ही, मैंने बोला भी था तुमको कि तुम पढ़ो आंसर, फिर बुक बंद करो फिर लिखो तुरंत. जब तक लिखोगे नहीं ना, नहीं जमेगा. हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ, तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है वो, याद भी आना पड़ता ना सब. तुम्हारे बैच को मैंने मेरा स्टडी मटेरियल दिया था क्या? हाँ, केस स्टडीज वाला. हाँ, तुम्हारे बैच में सर ने पढ़ाया ना पूरा, आमिर सर ने. नहीं, उसके पहले के तो 2-3 साल मैंने ही पढ़ाया ना. तो मैंने केस स्टडीज का अलग से बुक दिया था पूरे आंसर्स के साथ. तो वो अगर रोज के रोज लिख लेते 3-3 3-3, तो बेटर है. कोई बात नहीं, चलो. बैंक अकाउंट डेबिट 8 lakhs. फर्स्ट एंट्री.
अब तो क्या है, टाइम बहुत कम है, तो अभी तो ठीक है, तुम प्रॉपरली तुम्हारा टाइम एलोकेशन करके पढ़ाई करो, लेकिन एक ऑफर है तुम बच्चों के लिए, और तुम सिंसियर बच्चे हो, संडे के दिन भी आ रहे हो, वेराज ये कोई मेरे लिए है नहीं, तुम्हारे लिए ये तुमको रियलाइजेशन है, इसलिए तुम आज क्लास में बैठे हो। इंटर के लिए ऑफर है तुमको, डे वन से तुम्हारा मेंटरशिप मैं देने को तैयार हूँ तुमको, डे वन से, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू विल पास बोथ द ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नो फीस, उसकी मेंटरशिप की कोई फीस नहीं। तुम सिंसियर बच्चे मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट हो इसलिए, बट फिर मैं जो बोलूंगा वो फॉलो करना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, मैं रेगुलर वॉच रखूंगा तुम्हारे ऊपर, जरूरत पड़ी तो गालियां खानी पड़ेगी मेरी, वो तो वैसे भी खाते हैं है ना जरूरत पड़ी तो, जरूरत पड़ी तो फटके भी मारूंगा। हाँ, तो जोक्स अपार्ट, डे वन से बेटा वो कमिटमेंट दिखना चाहिए। तुम बहुत सिंसियर बच्चे हो, बट टाइम एलोकेशन तुम्हारा बहुत चैलेंज हो गया ऐसा लगता है मेरे को पर्सनली, सिलेबस भी बहुत एक्सटेंड हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए था, सेल्फ स्टडी का टाइम ही खा गया पूरा तुम्हारा। जो बेस्ट पॉसिबल अभी हो सकता है वो तो करते हैं। अब मुझे लगता है कि अकाउंट्स के रिवीजन के लिए बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए ये बैच होने के बाद, अब बहुत फटाफट हो जाएगा, अपन ऑलरेडी पांच पांच सम्स तो सॉल्व कर ही चुके हैं एडिशनली, रेगुलर बैच में भी किया है, अब टाइम नहीं लगेगा अकाउंट्स को, अब और फास्ट हो जाएगा अकाउंट्स। बाकी सब्जेक्ट को प्रॉपरली लेकिन टाइम एलोकेट करके पढ़ो, अननेसेसरीली ना, ये मेरे को मालूम है ये बोलना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट ये वन डे बिफोर एंड ये चक्कर में मत पड़ो बेटा, तुम सिंसियर बच्चे हो, तुम अपना अपना सेल्फ स्टडी अच्छे से करो। ये क्या है ना, अपने को लगता है कि चलो ये भी हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अपने को समझना चाहिए कि अपनी पढ़ाई कहाँ है ना, अपन कितने पानी में है। एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर अपन डिपेंडेंसी इतनी प्रोफेसर पे रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है यार, इतने हैंडीकैप्ड बन के तो कैसे चलेगा ना, खुद का कुछ चाहिए कि नहीं। सिंसियरली पढ़ाई करो, लेकिन अब एक मिनट वेस्ट मत करो, परसों बोला था वैसे नींद पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, सो तुम 8 घंटे सो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, बाकी का बचा हुआ टाइम जो है उसमें टाइम पास नहीं होना चाहिए। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 lakhs 8 lakhs। being fresh issue of shares, being fresh issue of shares, allot करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit 8 lakhs to equity share capital account 8 lakhs, being allotment of fresh shares, being allotment of fresh shares. Next, bank account debit 4 lakhs to 12% debentures account, डायरेक्टली दे रहा हूँ मैं, to 12% debentures account, being fresh issue of debentures,
अब what is the nominal value of preference shares to be redeemed? 10 lakhs और 10% प्रीमियम पेबल तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, प्रोविजन करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और बोला है प्रॉब्लम की प्रॉफिट सफिशिएंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ₹1 lakh to premium payable on redemption account, ₹1 lakh being provision for premium payable on redemption। मेरे को बोलो टोटल रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 10 लाख नॉमिनल वैल्यू, उसमें से प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कितना? 8 लाख डिवेंचर्स का कंसिडर नहीं होगा, तो रिमेनिंग 2 lakhs इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सीआरआर में जाएगा। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ₹2 lakhs टू सीआरआर अकाउंट 2 lakhs being provision for redemption out of profits of the company। नेक्स्ट 10% redeemable preference share capital account debit, 10% redeemable preference share capital account debit, ₹10 lakhs premium payable on redemption of preference shares account debit, ₹1 lakh to preference share holders account, 11 lakhs being amount due on redemption, being amount due on redemption। लास्ट एंट्री पे करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, 11 lakhs to bank account, 11 lakhs। छोटा सा वर्किंग नोट, छोटा सा वर्किंग नोट, ascertainment of profits to be transferred to CRR, ascertainment of profits to be transferred to CRR।
राइट हैंड साइड कॉर्नर रुपीज, nominal value of nominal value of preference shares to be redeemed 10 lakhs. Less redemption out of proceeds of fresh issue of shares, ऐसे specific लिखो. Less redemption out of proceeds of fresh issue of shares. Eight lakhs. Therefore, redemption out of profits of the company. Therefore, redemption out of profits of the company 2 lakhs. Therefore, profits to be transferred to CRR 2 lakhs. Therefore, profits to be transferred to CRR 2 lakhs. आया सबका? याद आए कंडीशंस रिडम्पशन के? पक्का? सी यू टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock, सवेरे बराबर 9 बजे मिलते कल, ठीक है? 9 से 12. थैंक यू गाइज, बाय बाय, एंजॉय संडे.